Hello everyone, I'm your Vishal Chawda, back again with our next topic of class 11th. In our previous video, we will discuss the projectile, or we have two types of projectile, horizontal projectile and angular projectile. So ਆਪਾਂ discuss ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ horizontal projectile. So what is horizontal projectile? It is that projectile when a body or any object throw from any height any height. So suppose any top of the building or any height of the building, and this is a called horizontal projectile and it shows the parabolic motion. Now today we will discuss angular projectile. For example, when a cricketer throw the ball by its hand or hit through a ball or hit through a bat, so that type of motion or that type of projectile is called angular projectile when a body is thrown with some angle. So take an example or take an expression of this projectile. So that is angular projectile. Okay. Suppose here it is body throw. There are two axes, x-axis, y-axis. When a body is thrown from that point or region with some initial velocity which is u and makes an angle theta with x-axis. So u can be resolved into two components, u cos theta and here it is u sin theta. So ux in x-axis the velocity is u cos theta and uy it is u sin theta. So firstly we have to find, this is the maximum height h and this distance is y. So we have to find the value of or the motion of this projectile or किस path ਨੂੰ follow कर रहे हैं. So firstly we have to find the path of projectile or a trajectory of projectile. So firstly path find करना. So path find लिए first part अपन solve कर रहे हैं जी, motion along horizontal direction. Horizontal मतलब x axis देख रहे हैं, horizontal direction. So motion along horizontal direction. So firstly s of x is equals to uxt plus half ax t square. Sx is equals to displacement of that type. Ux is a velocity along x-axis time half ax t square. So we have to discuss. Suppose ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ projectile ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਦੀ velocity ਕੀ ਹੈ ਜੀ, horizontal direction ਦੇ ਵਿੱਚ constant velocity ਹੈ. If the velocity is constant, then acceleration is 0. So put their values. X is equals to sx ही अपना x है, ux की value u cos theta and here it is t. आप वाला component जो होगा 0 होगा. So तो हम find कर लिया t की value u cos theta divided by x. Equation number 1. Now motion along vertical direction. So now find करना motion along vertical direction ਦੇ. तो vertical direction ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ, sy is equals to uy t plus half ay t square. ਹੁਣ body है ਜਿਹੜੀ throw कर रही है against to the gravity. So acceleration की value की हो जाएगी ay हो जाएगा ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ minus of g, uy हो जाएगा u sin theta. तो पुट कर दो वैल्यूज, xy is equals to y, uy की वैल्यू आ गई u sin theta into t plus half minus of g t square. अब माइनस आगे आ जाएगी जी, अपना क्या हो जाएगा नेगेटिव साइन. So equation number 2. So put the value of this t in that equation. So we have to y is equals to u, इथे भी t अपने को आ जाएगा u sin theta multiply u cos theta upon x minus half g. हाँ जी अपने को आ जाएगा u cos theta upon x the whole square.
तो हम प्रूव कर देंगे y इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन x माइनस हाफ जी यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाय x स्क्वायर। जी अपने को वैल्यूज आ गई, t की वैल्यू की यू कॉस थीटा बाय x पुट करता। This is also equation of projectile. So which projectile? It is again, it shows parabolic path. Parabolic path. So this is the equation of projectile or path of projectile, which is parabolic. Now next is, so the next topic is time of flight. हाँ जी, time of flight means how much time it taken from O point to B point. means उसे कितना टाइम होने लग गया O तो B तक. So दो टाइम ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੂੰ डिवाइड कर लेने ਆਪਾਂ O to R, R to B. So O to R is time of ascent मतलब ऊपर जाने का टाइम, R to B is time of descent नीचे जाने का टाइम. So this is the same time. So T is equals to total time is equals to 2T. एंड t इज इक्वल्स टू t बाय 2. तो t बाय 2 ऊपर कैरी कर लेंगे तो अपने को इक्वेशन आ गई vy इज इक्वल्स टू uy प्लस ay इनटू t. आई हुई इक्वेशन अपनी v इज इक्वल टू u प्लस at. हाँ जी, एक्सेलरेशन की नहीं होगी g, vy की वैल्यू की होगी. हाँ जी, ਜਦੋਂ कोई बॉडी ऊपर जा रही है स्टॉप कर जाएगी, दैट मींस vy 0, uy u sin थीटा. एक्सेलरेशन की नहीं आ जाएगी जी माइनस ऑफ g अगेंस्ट द ग्रेविटी एंड t की वैल्यू की नहीं आ जाएगी t बाई 2. तो इधर आ जाएगा अपने को g t बाई 2 इज इक्वल टू u sin थीटा. सो टाइम इज इक्वल टू 2u sin थीटा बाई g. सो दिस इज द टाइम ऑफ फ्लाइट. एंड द नेक्स्ट इज रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल. So what is the range of projectile? Range means that distance O to B. So this is called range of projectile and it is denoted by capital R. So range, it is distance, is equals to velocity into time. Velocity into time. So horizontal velocity कितनी है अपने को? U cos theta. And what is the value of t? 2u sin theta by g. तो इतने देखिए इक्वेशन बन रही है अपने को सॉल्व होके बन गया u स्क्वायर 2 sin थीटा cos थीटा अपॉन g. ऐसे फॉर्मूला बन रहा है जी 2 sin थीटा cos थीटा. मैथ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ट्रिग्नोमेट्री ਵਿੱਚ 2 sin थीटा cos थीटा इज इक्वल टू sin 2 थीटा. सो r ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬਣ ਗਈ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ u स्क्वायर sin 2 theta upon g. So this is the range of projectile which is equals to horizontal velocity multiplied with time, and this is a distance. So u cos theta to u sin theta by g. We know that 2 sin theta cos theta is equal to sin 2 theta. So this is the range of projectile. Now next topic is maximum height of angular projectile. That height in which the maximum height attained by any object above the projection. मतलब ग्राउंड तो टॉप मोस्ट तक जी सब तो मोस्ट मैक्सिमम हाइट होगी उन्होंने ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ फाइंड करना. So we know that sy is equals to uyt plus half ay t square. So sy नो पुट कर लेंगे h maximum height. We know that uy is equals to u sin theta and that ay is equals to minus of g gravity. And what is the time? So time is equals to t by 2. Total time ascent and descent तो इतने हाफ ही लगेगा. t की वैल्यू को हमने फाइंड की थी 2u sin थीटा by 2g आ गया. 2 ना 2 कैंसिल होगा तो की बन गया u sin थीटा by g. तो वैल्यूज पुट कर देंगे आप. h is equals to u by वैल्यू u sin थीटा multiply by u sin थीटा अपॉन g माइनस हाफ इतने क्या गया थोड़े को g t स्क्वायर का मतलब u स्क्वायर sin स्क्वायर
थीटा बाय जी। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਜੀ ਸਕੁਅਰ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਜੀ ਨਾਲ ਜੀ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣਾ, ठीक है जी। ਹੁਣ इधर देखो, इधर भी की है u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाय जी, इधर भी की है u स्क्वायर sin स्क्वायर हाफ जी। ਹੁਣ इधर 1 है, इधर हाफ है, अगर 1 चो हाफ माइनस कर दिए मींस इसे कॉमन कर लेने ਆਪਾਂ u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाय जी, अंदर की बचेगा ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 1 माइनस हाफ, दैट इज हाफ, मैक्सिमम हाइट बन गई अपनी u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाय 2g। so this is the maximum height of projectile attained by projectile, so maximum height attained by projectile। so the next is angle of projection at maximum range। ਹੁਣ ਕਿੰਨਾ ਐਂਗਲ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਰੇਂਜ ਕੀ ਹੋਏਗੀ ਮੈਕਸਿਮਮ। ਹੁਣ ਰੇਂਜ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣਾਇਆ ਆਪਾਂ, ਕੀ ਸੀਗਾ ਜੀ ਆਪਣਾ u स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन जी। ਹੁਣ रेंज मैक्सिमम कब होगी, जब दिस कंपोनेंट मींस टू से sin 2 थीटा की होएगा 1 होएगा। sin 1 कितने पे ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਆਪਣਾ, सो sin 2 थीटा इज इक्वल्स टू sin 90 एंड sin and sin ऑपोजिट कैंसिल होगा जी, 2 थीटा इज इक्वल्स टू 90 एंड थीटा इज इक्वल्स टू 45 डिग्री। एट 45 डिग्री सो रेंज इज मैक्सिमम कितनी रेंज होगी u स्क्वायर बाय g एट this angle at 45 degree angle the range is maximum means to say यदि आ वाली रेंज होगी O to B, OB डिस्टेंस क्या होगा मैक्सिमम होएगा at angle 45 degree। so this is the angle of projection at maximum range। हाँ जी, हम अपन नेक्स्ट ਇਹਨੂੰ डिस्कस करते हैं दोनों प्रोजेक्टाइल्स ਨੂੰ horizontal and angular with the help of some examples। so we will discuss the projectile, horizontal projectile with the help of this example। so the bomb is dropped from an aeroplane, कहना कोई बॉम्ब नो पर ड्रॉप कर रहे हैं एरोप्लेन तो when it is directly above a target, directly की है टारगेट दे above है at a height of 1500 meter, the aeroplane is going horizontally with a speed of 500 km per hour। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ एरोप्लेन है वो मूव कर रहा है with the speed of 500 km per hour, by how much distance बॉम्ब ਜਿਹੜਾ मिस कर देगा टारगेट। ਇਹਨੂੰ सॉल्व करने ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ मोशन, वर्टिकल मोशन along vertical direction। वर्टिकल डायरेक्शन ਦੇ ਵਿੱਚ मोशन ਨੂੰ फाइंड करना है तो s y ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਲੈ ਲਾਂਗੇ ਉਹਨੂੰ ਜੀ y, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਿਵਨ ਹੈ डिस्टेंस 1500 मीटर। नेक्स्ट एक्सेलरेशन, ग्रेविटी ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਰਿਹਾ g, ਜਿਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एंड स्पीड अपन ਨੂੰ ਗਿਵਨ ਹੈ इनिशियल वेलोसिटी ਕੀ ਹੋਏਗੀ 0, टाइम ऑफ फाइंड करना अपने को आ जाएगा y इज इक्वल्स टू sy इज इक्वल्स टू u by t प्लस हाफ a by t स्क्वायर। तो y की वैल्यू 1500 मीटर, u y की वैल्यू 0 है जी, तो फर्स्ट कंपोनेंट 0 हो गया, हाफ 9.8 t दा स्क्वायर। तो अपने को t आ जाएगा t स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 3000 डिवाइडेड बाय 9.8 एंड सॉल्व करके तो टाइम आ जाएगा 17.5 seconds। So this is the time along motion along vertical direction। So next is motion along horizontal direction। horizontal direction की जे गल करिए आप, सपोज टाइम कितना अपने को 17.5 सेकंड, डिस्टेंस आप फाइंड करना, स्पीड अपन गिवन है, वेलोसिटी कितनी है जी 500 किलोमीटर पर आवर। केड़ी वेलोसिटी है अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन दे विच है, तैनू चेंज कर लो मीटर पर सेकंड दे विच, ये आ जाएगी तुहाडे कोल 139.15 मीटर पर सेकंड। सो व्हाट इज टाइम, सॉरी व्हाट इज डिस्टेंस, डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। तो बोथ मल्टीप्लाई कर दो, 139.15 मल्टीप्लाई बाय 17.5 क्या आ जाएगा तुहाडे कोल 2470 मीटर। इन्ने डिस्टेंस दे नाल वो की कर देगा इहनू मिस कर देगा इस बॉडी नू और इस टारगेट नू मिस कर देगा बॉम्ब विद दिस डिस्टेंस। सो द क्वेश्चन की सी अपने कोल स्टार्टिंग दे विच मैं रिपीट कर रहा है, अपने कोल किसी का एरोप्लेन जा रहे हैं,
किन्ने दी स्पीड ते हॉरिजॉन्टल दे विच 500 किलोमीटर पर आवर दी स्पीड दे नाल और उन्हें कोई टारगेट दे उत्ते बम थ्रो कीता डिस्टेंस कितना सी 1500 मीटर एक्सेलरेशन कितनी होगी 9.8 इनिशियल वेलोसिटी 0 सो y is equal to u by t plus half a by t square y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰਤੀ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ 0 ਹੈ ਹਾਫ 9.8 t square ਦਾ ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਟਾਈਮ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਲੈ ਲਿਆ ਜੀ ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਸ਼ਨ the distance is equals to velocity into time velocity given horizontal direction ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਿਆ ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਬਾਈ 5 by 18 and this is 139.15 मीटर पर सेकंड तो टाइम कितना आ गया 17.5 सेकंड गिवन सी फाइंड किया ਆਪਾਂ तो डिस्टेंस आ गया ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ जिस डिस्टेंस ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਰਤਾ ਟਾਰਗੇਟ ਨੂੰ ਮਿਸ ਕਰਤਾ ਤਾਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਤਾ ਆਪਣੇ तो 2470 approximate 2470 मीटर किया गया ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ डिस्टेंस आ गया जिस डिस्टेंस ਨਾਲ ਉਸਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਟਾਰਗੇਟ ਨੂੰ ਮਿਸ ਕਰਤਾ ਹਾਂਜੀ तो नेक्स्ट एग्जांपल ਆਪਾਂ डिस्कस करते हैं एंगुलर प्रोजेक्टाइल So the next question is a shell is fired at an angle 30 degree ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ shell ਨੂੰ fire ਕੀਤਾ ਕਿਸੇ angle ਤੇ 30 degree ਤੇ horizontal with a velocity of 196 meter per second ਹੁਣ ਕੋਈ body throw ਕਰ ਰਹੇ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੇ angle ਤੇ 30 degree ਤੇ ਕਿੰਨੀ velocity ਦੇ ਨਾਲ 196 meter per second ਦੇ ਨਾਲ gravity ਕੀ ਹੋਏਗੀ ਜੀ 9.8 meter per second so find the time of flight so time of flight ਦਾ ਆਪਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀਤਾ 2u sin theta by g so put कर दो values 196 sin 30 divided by 9.8 so 2 into 196 sin 30 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੋਗੀ 0.5 divided by 9.8 98 ਰਹਿ ਗਿਆ ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਡੈਸੀਮਲ ਹਟਾ ਦੋ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 20 seconds so next we have to find the range so range ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਜੀ u square sin 2 theta upon g ਹਾਂਜੀ u square 196 ਦਾ square sin 2 theta means to say sin 60 upon g ਦੀ ਵੈਲਿਊ 9.8 so sin 60 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ 196 square into 0. ਹਾਂਜੀ sin 60 ਹੁੰਦਾ √3/2 that means 0866 upon 9.8 हाँ जी सॉल्व करके अपने की आ जाएगी रेंज फाइंड हो जाएगी नेक्स्ट अपना रहेगा मैक्सिमम हाइट फाइंड करते हैं अपन नाउ वी हैव टू फाइंड मैक्सिमम हाइट h h ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆਪਾਂ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਜੀ u square sin square theta by 2g so वैल्यूज पुट कर दो u ਦੀ ਵੈਲਿਊ 196 ਦਾ square sin square theta means to say sin 30 ਦਾ square sin 30 ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ 0.5 ਦਾ square upon 2 into 9.8 so ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੋਲਵ ਹੋ ਕੇ ਆ ਜਾਏਗਾ ਜੀ ਇਹ ਨੀਅਰ ਅਬਾਊਟ 490 meter so this maximum height is 490 meter so मैं again explain कर देना अपने कोल क्वेश्चन सी कि कोई बॉडी ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਥਰੋ ਕੀਤਾ किस एंगल ਤੇ 30 डिग्री ਤੇ initial velocity 196 so we have to find time of flight range and maximum height so time ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਗਾਇਆ ਜੀ time of flight 2u sin theta by g 2u sin theta by g 2 into 196 sin 30 9.8 sin 30 ਦੀ ਵੈਲਿਊ 0.5 ਡੈਸੀਮਲ ਕੈਨਸਲ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ time of flight ਆ ਗਿਆ 20 ਸੈਕਿੰਡ so next is maximum range u square sin 2 theta by g u square ਦੀ ਵੈਲਿਊ 196 ਦਾ square sin 2 theta means sin 60 and gravity is 9.8 sin 60 is √3/2 so √3/2 सॉल्व करके कितना होता है 0.866 so डिवाइड करके ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਕੋਲ ਰੇਂਜ ਆ ਗਈ ਜੀ 3394.7 मीटर and the next and last is height maximum height u square sin square theta by 2g so u square ਦੀ ਵੈਲਿਊ 196 ਦਾ square sin square theta 0.5 ਦਾ square because sin 30 ਆਏਗਾ sin 30 ਦਾ square ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ 1/4 and 2 into 9.8 ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 490 meter so this is the two examples of projectile horizontal and angular projectile now in our next video we have to prove our next articles angular motion ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ next article ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ